Hello friends, welcome to Riya's classes. Today in this session we will study about the topic consideration of the Indian Contract Act 1872. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So now let us begin by understanding what is consideration. एक author definition हम देख लेते हैं. An author gives a definition. Author है हमारा Pullock and he says that consideration is the price for which the promise of the other is bought and the promise thus given for value is enforceable. So whenever a transaction takes place, each party gets something. तो दो parties involved होते हैं एक transaction में और एक पार्टी ऑफर करता है समथिंग एंड दूसरा पार्टी वो उससे खरीदता है समथिंग. सो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, दोनों पार्टीज का बेनिफिट हो रहा है, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा है एंड दैट समथिंग जो उनको मिलता है दैट समथिंग इज नोन एज कंसिडरेशन. हम अंडर सेक्शन 2D ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब ये वाला डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं. अंडर सेक्शन 2D of the Contract Act, it states that when at the desire of the promisor, the promisee or any other person abstain from doing something, such act or promise is called a consideration for the promise. तो ये हुआ आपका consideration का definition, यानी something in return. Whenever a benefit is gained by a party to the contract in return of promise made by him, that will be known as कंसिडरेशन. मीनिंग देख लेते हैं कंसिडरेशन का. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न और क्विड प्रो क्यू, यानी कि कुछ ना कुछ आपको दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा है इन रिटर्न ऑफ द एक्ट दे आर परफॉर्मिंग. इट मीन्स बेनिफिट गेन बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस मेड बाय हिम. वही सेम चीज समथिंग इन रिटर्न जो उसको वापस मिल रहा है. अ पार्टी हु हैज अंडरटेकन एनी ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रिसीव समथिंग इन रिटर्न. तो यही समथिंग इन रिटर्न जो होगा यही आपका कंसिडरेशन कहलाएगा. दिस समथिंग विच द पार्टी गेट्स इन रिटर्न विल बी नोन एज कंसिडरेशन. नाउ लेट अस सी कंसिडरेशन जो होता है. कंसिडरेशन इट कुड बी ऑफ 3 काइंड्स, यानी कि इट कुड बी ईदर पास्ट कंसिडरेशन, it could be present consideration or it could be either future consideration. तो 3 तरीके से consideration हो सकता है. तीनों को हम एक एक करके देखते हैं. अब ये तीनों जो होगा कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है. इट विल बी लिंक्ड टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन. तो कोई भी ऐसा कंसिडरेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन से पहले ही परफॉर्म हो चुका हो, यानी कि बिफोर contract formation. So whenever a party has already performed his obligation, that is before formation of the contract, it is said that he has supplied past consideration. That is, the consideration received by the other party is past consideration. तो जब भी before formation of the contract already obligation party perform कर चुकी होगी तो उसको हम बोलेंगे past consideration. सेकेंड केस हम देखते हैं. सेकेंड इज प्रेजेंट कंसिडरेशन. अगेन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन से लिंक्ड है ये. व्हेनेवर अ पार्टी परफॉर्म्स हिज ऑब्लिगेशन simultaneously with the formation of the contract, it is said that he has supplied present consideration. तो जिस तरीके से पास्ट कंसिडरेशन में बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, प्रेजेंट कंसिडरेशन में साइमल्टेनियसली होगा. कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ ही साइमल्टेनियसली अगर पार्टी हमारा ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करती है तो उसको आप बोलोगे इट इज सेड टू बी प्रेजेंट कंसिडरेशन. नाउ लेट अस सी द थर्ड वन. थर्ड वन इज फ्यूचर कंसिडरेशन. हियर whenever a party agrees to perform his obligation after formation of the contract, that is at a future date. future date में after कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, जब वो अपना पार्टी बोल रहा है कि तब वो अपना पार्टी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करेगा, देन इट इज सेड दैट ही हैज सप्लाइड फ्यूचर कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन जो होता है इस 3 तरीके का हो सकता है. इट कुड बी इधर पास्ट कंसिडरेशन, इट कुड बी प्रेजेंट कंसिडरेशन या फिर तीसरा इट कुड बी फ्यूचर कंसिडरेशन. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द लीगल रूल्स दैट इज रिगार्डिंग कंसिडरेशन. तो पहला रूल यही है कि कंसिडरेशन इज एसेंशियल. कंसिडरेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सेकेंड, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. प्रोमिसर के डिजायर से ही कंसिडरेशन
मूव करेगा. An act or subsistence shall constitute a good consideration only if it is done at the desire of the promisor. The third one is that consideration may move from the promisee or any other person. The fourth one is that consideration may be past, present or future. ये हमने देख लिया है, वो या तो past हो सकता है, present हो सकता है, या it could be either future consideration. Fifth legal rule is that consideration need not be adequate. So consideration जो है वो it need not be adequate, यानी कि the law requires that there must be consideration in every contract. However, adequacy of consideration is not required. Even if it is proved that such consideration is inadequate, the contract is not void. In fact, the fact of inadequacy of consideration shall be given due weightage while determining whether the consent of the promisor was freely given or not. And the last sixth one is consideration must be lawful, यानी कि an agreement is void if the consideration furnished by any of the parties is unlawful. कुछ भी unlawful नहीं चलेगा, it should be always lawful. तो ये कुछ legal rules हैं that is regarding consideration. Now, under the provisions of the Indian Contract Act 1872, there are some circumstances under which a contract without consideration is considered as void. तो no consideration, no contract का rule जो है उसके अंडर कुछ exemptions होते हैं. There are some exemptions to this rule और हम देखते हैं वो कौन कौन से exemptions हैं. The first one is agreement that are made on account of natural love and affection. The second one is the promise to pay a time barred debt, यानी कि voluntarily अगर कोई promise करता है to pay a time barred debt, इसको हम क्या बोलेंगे, ये exception है इस general rule का. The third one is that compensation for voluntary service. A party who renders some service to the other party or performs the legal obligation of other party. The party acts voluntarily. Voluntarily यानी कि the services are rendered without any desire of the other party or the legal obligation of other party is performed voluntarily. तो ये भी एक exemption हुआ इस rule का. The fourth one is agency. Agency यानी कि no consideration is necessary to create a agency. And the final one is completed gift. Gift जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं. For example, इसका मतलब ये है कि agreement to make a gift is not enforceable. However, once a gift has actually been made, the donor cannot demand it back on the ground that there was no consideration. तो ये हैं कुछ exemptions to the rule, और rule क्या था? No consideration, no contract. So thank you so much for watching. This was all about consideration. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.